Hey everyone, and welcome to day one of our Python journey. Whether we are a complete beginner or looking to add a powerful new skill to your toolkit, you have come to the right place. In this lecture, we are going to answer some fundamental what is program, what is Python, and how do we start writing our very first line of code. Let's dive in. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे what is Python. Before Python, let's quick define a program. A program is simply a set of instructions that a computer follow to achieve a specific task. Think of it like a recipe for a computer. We also need to understand the difference between an interpreter and a compiler, meaning it executed instruction line by example. जब हम लोग Python प्रोग्राम रन करते तो एक एक लाइन रन होता है, लेकिन जब हम लोग C या फिर C++ को जब रन करते तो मेन फंक्शन के अंदर से स्टार्ट होता है और से वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, पर वो एक मेन फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट होता है, तो उसके लिए हम लोग कंपाइलर यूज करते हैं और हम लोग पाइथन में इंटरप्रिटर यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे पाइथन क्या होता है। पाइथन इज a highly popular, high level interpreted programming language. It was created by Theodore Van Rossum and first released in 1991. तो जो जो हम लोग मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करते जा रहे हैं। Python is a high level program known for simplicity, readability, and versatility. पाइथन हम लोग कहाँ यूज करते हैं? वेब डेवलपमेंट में यूज होता है, डाटा एनालिसिस में यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड ऑटोमेशन में यूज होता है। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। बोथ आर नॉट सेम। Where we use Python, Python is a true powerhouse widely used across many fields like web development, I told you, data analysis, artificial intelligence, AI, ML, scientific computing, and automation. Why we choose Python? Python is easy to learn and read. Easy to learn and read. The syntax of Python are very easy. For example, we write print hello. In English, we also call display something. Then both have similar syntax. It offers large standard libraries like Pandas, TensorFlow, Scikit-learn, and many more. It is a object-oriented programming, support multiple programming. You need fewer lines of code compared to language like C, C++, or Java. Python works on different platforms like Windows, Mac, Linux, etc. What are the tools we use to write Python? First, we have several excellent choice for writing and running your Python code. The best one depends on what you are trying to achieve. For example, first is Python IDLE. It is the best for beginners. This is the integrated development and learning environment that come pre-installed with Python. It is a simple and lightweight. Why we choose it? It's excellent for beginners to quickly participate a small scripts. Second is Jupyter Notebook. Jupyter Notebook, a web-based environment that is highly popular in data science and AI. In Jupyter, we can run code cell by cell, visualize output in line. For example, we in Jupyter we can create graphs, images. Its killer feature is the ability to run code cell by cell and visualize output like graph or image in line. Why we choose it? It is perfect for data analysis, machine learning, and interactive exploratory coding. We can run code cell by cell, visualize output. These are the main feature of Jupyter Notebook. VS Code. In VS Code is Visual Studio. Visual Studio is a powerful, highly customizable code editor that uses Python extensions. It supports initial feature like debugging and Git integration. When we develop some website, we have to push that code into GitHub to launch. That's why it is best choice for large project or general professional development. Fourth is PyCharm, a full-featured integrated development environment, especially for Python. It offers advanced features like intelligent code suggestion, robust debugging, and integrated project management. Why we choose it? It is the top choice for professional software development.
best for professional software development. Fifth, online platform like Replit, online compiler, etc. This is summary table for all the tools. Ideally, Jupyter Notebook, VS Code, PyCharm, Google Colab, online platforms. This is also Google Colab is also an online platform. क्यों हम लोग यूज कर सकते हैं? This is friendly for beginners. Jupyter Notebook are used for data analysis and AI projects. VS Code are used for projects, big projects and professional coding, web development. In VS Code, we can also implement multiple types of code, for example, JavaScript, HTML in a single folder. Python used for large professional projects, and Google Colab are used for AI, ML, data science, and online platform for learning and quick testing. Let's write your first program. The simplest code is print. This is my first code. This is my first Python code. Then we have to save it and then run. This is output. Now we are going to understand print function. In print function is inbuilt function. The built-in print function is what we use to display output to the screen. It has a full signature with optional parameters like values, separate, and etc. And we also, at last, we use none. I will explain this. Print the values to a stream or to system, a standard output by default. Separate are used to separate the string inserted between values. For example, this is my code. First string, second string, and this is number. The star means you can pass multiple arguments at a time. For example, hello world are a string, but 2025 is a integer. Here we can pass multiple arguments. Objects means any Python data type. This is asterisk means you can pass multiple arguments. For example, hello world 2025 and more. These are values, multiple arguments. And object is what are the data types we can pass or which data types are using. An object can be any Python data type, a string, a number, a list, or so on. For example, print hello world 2025, where value is sequence of the three objects. The shape parameter. Shape a standard for separators. It's it's what gets placed between each value you print. For example, this. The default is single space. Default is single space. You can change it. The output show the hidden edge separators. Here we can implement this print A, comma, B, comma, save and run. ABS. By default, use separator as a space. Similar, when we use the end parameters and decide what to print after the last value. The default is new line character, which is why each print call normally a start on a new line. We can replace here comma separators by at the rate and by hashtag, and we can now print another value
hello, save and run it here। फाइल सबसे पहले क्रिएट करना है, तो जैसे हम लोग कहीं दूसरा फाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाकर न्यू फाइल में फाइल नेम लिखना है डॉट पी वाई से, पाइथन पे फाइल हमेशा डॉट पी वाई से सेव करना पड़ता है, इंटर प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सेव करेंगे और इसको रन करेंगे। ये हमारा पहला प्रोग्राम रन हो गया। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जो ये प्रिंट फंक्शन है, इसमें जब भी अगर हम लोग दूसरा प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, इसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली वो लाइन चेंज कर देगा। सेव रन, ये इसमें क्या हो रहा है, जब भी हमारा प्रिंट फंक्शन एक रन हो रहा है, उसके बाद ये दूसरे के लिए वो लाइन चेंज कर रहा है। इसमें क्या होता है, जब भी हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारे इनबिल्ट एक फंक्शन है, जो उसमें बहुत सारे फंक्शन सेव रहते हैं। तो जैसे इसमें देख सकते हैं हम लोग, ये एक एक इनबिल्ट प्रिंट फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है, उसके अंदर सेपरेट इंड ये सब बाय डिफॉल्ट, जब भी हम लोग कोई प्रिंट के अंदर अलग अलग स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों स्ट्रिंग को स्पेस से सेपरेट कर दे रहा है। तो ये जो सेपरेट स्ट्रिंग है, वो क्या करता है, जब भी हम लोग इसके बीच में भी कोई स्पेस नहीं दे रहे, वो क्या कर रहा है, दो स्ट्रिंग को सेपरेट कर दे रहा है। जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये है कॉमा, दूसरा स्ट्रिंग हम लोग बी लेते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको रन कर रहे हैं। यहाँ ए और बी के बीच में स्पेस है, जबकि हम लोग यहाँ स्पेस दिए नहीं है। सेम ये एंड के साथ होता है, जैसे जब जब भी हम लोग एक प्रिंट लिखते हैं ऊपर प्रिंट फंक्शन, और दूसरे प्रिंट फंक्शन में वो क्या करता है, यहाँ पे एक सेव रहता है एंड करके, वो क्या करता है, लाइन को चेंज कर देता है। तो हमेशा वो जब भी कोई भी प्रिंट फंक्शन हम यूज करें, वो लाइन हमेशा चेंज कर देगा, उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे एक देख रहे हैं अभी, ये कॉमा सेपरेट को चेंज कर रहे हैं, सेपरेट की जगह पे हम लोग @ यूज कर रहे हैं, कॉमा, और एंड की जगह पे हम लोग हैशटैग यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग इसके बाद में कोई प्रिंट फंक्शन लिखेंगे, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं प्रिंट करेगा, वो सेम लाइन में प्रिंट करेगा। सेव रन, ये अभी स्पेस नहीं दिया, वो @ दिया, और जब लाइन चेंज करना था वहाँ पे हैशटैग दिया। तो ये इनबिल्ट फंक्शन रहता है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये सेम वही एक्सप्लेनेशन है, उसमें एक रहता है ये वैल्यू, तो ये क्या करता है, मल्टीपल स्ट्रिंग को स्टोर कर, डाटा टाइप को स्टोर करता है। ये जो स्टार है, वो मल्टीपल वैल्यूज लेता है, जैसे हेलो वर्ल्ड, हम लोग यहाँ इंटीजर भी ले सकते हैं। तो ये स्टार जो है मल्टीपल वैल्यूज लेता है, और ऑब्जेक्ट वो मल्टीपल डाटा टाइप्स एंट्री लेता है, आर्गुमेंट्स लेता है। जैसे अभी ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो ये स्टार है, वी कैन पास मल्टीपल आर्गुमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट मींस डाटा टाइप, जो हम लोग स्ट्रिंग नंबर लिस्ट जो यूज कर रहे हैं, जैसे अभी ये हेलो स्ट्रिंग है, वर्ल्ड स्ट्रिंग है, पर ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो इंटीजर है। सेम सेपरेट के साथ जब भी हम लोग कोई मल्टीपल लिखते हैं, उसको सेपरेट हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अभी प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो जब हम लोग इसको आउटपुट करें, तो ये ए माइनस बी ये आउटपुट रहेगा, क्योंकि हम लोग सेपरेट चेंज कर रहे हैं। कहीं हम लोग कुछ नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट वो स्पेस क्रिएट करता है। सेम एंड के साथ है, जब भी हम लोग बाय डिफॉल्ट कहीं कुछ नहीं एंड यूज कर रहे हैं, तो क्या करता है, लाइन चेंज करता है। डिफॉल्ट इज अ न्यू लाइन, तो इस प्रिंट स्टार्ट या न्यू लाइन, जब भी हम लोग अलग अलग प्रिंट यूज करेंगे वो न्यू लाइन। जैसे एक एग्जांपल है, एक प्रिंट फंक्शन हेलो लिख रहा है और दूसरे में वर्ल्ड लिख रहे हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग स्पेस दे रहे हैं, तो क्या करेगा, हेलो स्पेस और वर्ल्ड प्रिंट करेगा। और कहीं हम लोग ये स्पेस यहाँ पे नहीं देते, तो हेलो और वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता। और ये जो नन है लास्ट में यहाँ पे, वो क्या करता है, जब भी हम लोग कोई प्रिंट फंक्शन लिख रहे हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दे रहे, तो वो पास कर दे रहा है, एरर थ्रो नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग नन यूज करते हैं, ताकि वो एरर थ्रो ना करे।